Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and I'm here because I usually come live to discuss certain things with you and things that have over the years added value in my life, and I share those tips and essences with my audience and those of you who follow me regularly via Facebook or YouTube or through LinkedIn or Twitter or Insta, and there are so many other platforms. So wherever I'm online, and to those of you who are following me from there regarding my content or whatever I'm uploading. So first of all, thank you for that, and thank you for all the comments and good feedback that you gave. Um, Today, why I wanted to come live was that I wanted to discuss what did CSS taught me, like when I failed it, what kind of lessons did it teach me. So I'm just going to share those few things with you, what it taught me, and then every one of you who is either an aspirant or has already taken CSS exams or is in the civil service or can be anywhere at their own stage wherever they are. So like when I took CSS exams, I too was very excited, and I too did work very hard, because I would say it's not a joke. CSS, which is Civil Service Competitive Examination, and it is one of the most prestigious and most difficult exams in our country, Pakistan. So I prepared really well, and the subjects combination I had that was related with one of the major subjects I had studied, because I had done my post graduation. I did masters in English literature and linguistics. So that was one of the main subject that I took as part of CSS examination. Now, what I want to say is that when you select your subjects, there are some things which you need to keep in mind. Now, one of those things is that always go for subjects. Don't go for subjects which you think you are good at. Go for subjects which are mark scoring, because that helps a lot. And these are the inside tips which I don't know whether people would be offering them to you or not, but since I myself was a candidate and I went through this process, so I know it that these things happen. And I didn't go for any kind of tuition. I always had this thing of studying on my own. So even now when I'm studying, it's like I just either I'm doing online learning or distance learning or whatever. It's a self-paced mode which I follow. So I like to explore things in that way, and that helps me, because I think my mode of study, it's more like I do things on my own rather than doing it in groups or with peers or like going elsewhere. It wastes a lot of time, I think. So nowadays the time and everything, it's more of online and whatever you're doing. Okay, so one of the main subjects that was English literature, which I took, and I thought that since it's my strong area, I'm going to excel in it. Well, I did in my time. I really got good score, and whoever I asked, they didn't get that kind of marks. But still, it was not, when the overall aggregate is made, it's not a very high aggregate. Though if you consider it separately, the marks would be really good. Then another subject which I had was political science. Again, one of the subjects that you do get individually, you do get good marks, but if you combined it with the aggregate, you cannot make that a good aggregate. And so this was another subject I took. Then there was one more subject. Yes, since I had political science, now part B of political science, it's related with constitutions. So another subject which I took, which was of 100 marks. Now these two, English literature and
political science, when I did, they were both consisted of 200 marks each. So 400 for this, and then for 100 I took constitutional law, which was mostly covered in part B of political science paper. And then there was another subject which I took, which was public administration, and that too I really got a very good score in that, which mostly people do not get, because they say we can't, everyone has a different way of attending. So probably the way I attended, the examiner liked that way, and so I got a good score in that. And the other subjects, they are compulsory, so you have to prepare the compulsory, no matter what. So but for the optional subjects, you can always select what subjects you want. I would recommend that always go for subjects which are on the high score, and you get a really good score in those subjects. So overall, the aggregate you which you make, it's going to be a good aggregate. And then what I think is that even if you do get a good aggregate, it always depends from which quota you are applying. Now I think every quota, it has its own merits and demerits, but people who apply from Punjab quota, they really have to face really good competition, and it's really a tough one. So if from Punjab competition you are able to make in the civil services examinations, so that's a salute to you people. And then what I would like to add is that despite of preparing very well, there would be circumstances like when I did my examinations, I cleared the written portion. So most of the people, they don't clear the written portion in the first tense. Like they have to, you always have 3 attempts, and then it depends like if you are able to do it in the first attempt. So Alhamdulillah, I did it in the first attempt. I cleared the written portion, but where I didn't succeed, that was the interview part. So what happened in the interview, still I have my doubts, but the thing is that there are times when you just fail to understand why did this thing happen. Now today what I want to talk about is it's about the failures. So like when if I say that I passed the written portion, but I didn't pass the interview portion, and back then I should have been like like I really was depressed, because I could see 1.5 years hard work going to waste. Like when you give the written portion, then you have to wait for some months till the result comes, and then after that when you appear for the interview, then again you have to wait for another month to have that final result. And when you have that final result, then you are in that position to see whether you want to take the examination again or you want to move on from there. So I was depressed because I couldn't make it in the overall CSS examination. But that doesn't mean that you should, just leave life and you should say that, okay, I have failed this exam and I am unable to, go into any other area. Depression, yes, it does, empower you, and you do take time to overcome that depression. But the thing is that the more quick you are in accepting that failure, the more easily you're able to proceed. So what I did was that I moved on. Like I did take another attempt, no doubt, and in that second attempt I had much more good marks than the first one as compared to written. But then again, the interview part, and I won't go into those details what happened over there in the interview part, because I think my second interview, when I appeared the second time, I was much more prepared, much more much more bold than the first one, and much more experienced. But then again, it was not my cup of tea.
and I don't have regrets that I didn't make the CSS. I did make in the CSS competitions, because what I believe is that even though I did not do CSS, still I'm a happy person and I'm living my life, and I'm living it to the full, and I have that freedom to do whatever I want. If I want to do vlogging, I can do vlogging, and I am free from those kind of, which I think are shackles, when you want to express your point of view and you cannot express. Now this is for every one of those who are serving in different organizations. Either they are serving in government departments or in private organizations. They have certain codes which they have to follow, and they cannot go beyond those codes. Now when I'm doing podcasting with people, my first question is like, if they are serving some institutions, is there a bar for them to not to answer certain questions? And there are people who have those bars. They can't share everything because it's their department that does not allow them. But on the other hand, if I just randomly talk to people who are businessmen, or who are entrepreneurs, or who are serving different industries in their own private capacity, they don't have these bonds, or they are not they don't have these shackles which bind them, that they have to give answers of certain questions, and they can't answer certain questions. So that what I believe is that failing CSS, that gave me an advantage, that I can say, or I can do, or I can question, or I can share my opinion in any way I want. And there is no bar on me. No one can tell me that you are not supposed to question this, or you are not supposed to give an answer to this. So I can do anything what I want. And uh, okay, I'll just take some comments which some of you are watching. Okay, Mr. Faisal Masood, okay, thank you. um, if you people, those of you who are watching, and if you think that you want to ask any question, you're more than welcome to ask questions. I'll take your questions in between the live session, and I'll answer you. Okay, so I can see many people who are watching. Okay, Israr Ahmad, thank you. And finally, you caught me live. Otherwise, whenever I go live, I do not tell people, I just go live like that. And today is Jummah, and most of you must be preparing for Jummah prayers. If I'm not taking your time, you are more than welcome to, just leave the live session, and you can go and offer your Jummah prayers. So, no bar on that. You have. You don't need my permission to go and offer prayers. It's something obligatory, every one of us does, and you can even leave the session and go. Okay, so other than that, now this was some of the things which I faced, and then the other things which I want to discuss is that everything happens for a reason. Now, when we are in that particular situation, when we fail, we do not recognize, and we do not want to accept that there is a reason for this. Now, I think this is like after many years, when you get a certain position, or you are doing something which you love to do, then you're able to connect those dots. Why did this happen? Now, if I think that why I failed, one of the reason which I can think of is that if I was a CSP like many other people, I would not have that freedom to express myself the way I want to, or ask questions, or vlog, or do things which I like, and I would be barred by organizations or by the code. And this I can view, and this I can relate to, because I have a family background of bureaucrats, and I can see them like they are barred. They can't, talk about things,
and I don't feel that that bar, except that there are times and there are topics which I deliberately do not cover, cause I don't want anyone, whether it's my family member or whether it's people who are around me, they should come into some kind of difficulty just because of the things that I have said. And so from that point of view, I do not talk about those things. Plus, I do not like talking about those things, and one of those things is politics. I don't like talking about politics. And then finances, I don't like talking about finances. These are not my forte. And plus, when you talk about something which stigmatizes you, so I don't want to get into those areas. I love to talk about things which can add value to people's life. Now, if I'm talking about CSS or its failure or the experiences I had being a CSS candidate, or when I failed, how I felt, these are the things which I can share with you, because I have directly been through them. Then at other times when I share things, those are mostly the things which I have gone through. When I say that I share life experiences, now life experiences can either be directly applied on yourself, like if I have gone through those experiences, I can share those experiences. And then there can be other experiences, those which people have shared with me, and they want me that I should uh, okay, I have one person, and this person, he's I would say a really good mentor, and he's a really good colleague as well. And I ask a lot of things from him, and he's always contributing, and he shares his point of view, and he's always guiding me. And he's saying that I should talk in Urdu too. Okay. I can talk in Urdu, but my Urdu is not so good, so it's more comfortable for me to communicate with you in English rather than in Urdu. If I keep on switching from English to Urdu, so it becomes something difficult for me. It's not that I don't like Urdu. I love Urdu, and but I think there are words, there are specific words in Urdu which I just love, and I just love to relate things with Urdu. Okay, but I'll try to switch into Urdu and talk something into Urdu. But if I'm short of vocabulary, I'll just switch back to English. Okay, so I'm just switching to Urdu right now. Okay, so मैं ये कह रही थी कि when you do CSS, so it's not necessary that yeah. Oh my God, I feel so embarrassed. I'm switching again into English. I want to talk in Urdu, but again and again I'm switching into English. So CSS जब आप करते हैं तो you do if you are unable to do it, अगर आप नहीं कर पाते तो आप डिप्रेस हो जाते हैं. आपने डिप्रेस नहीं होना, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. बहुत कुछ है उसके अलावा करने के लिए. आप और बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हो. Oh, thank you so much. I'm having so much emojis, and thank you everyone जो emojis भेज रहे हैं. Okay, so CSS के बाद भी लाइफ होती है, और वो लाइफ ये होती है कि आप अपने लिए डिफरेंट मीडियम्स तलाश करें. आपको कहाँ पर काम करना अच्छा लगता है. अगर मैं अपने बारे में देखूं तो मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना अच्छा लगता है, मुझे वीलॉगिंग अच्छी लगती है, मुझे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है. मुझे उन लोगों से बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है जो कि अपनी लाइफ में डिफरेंट स्ट्रगल्स से गुज़र चुके हों या गुज़र रहे हों, और वो कुछ जो हमारी यूथ है या इवन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो मेरी एज ब्रैकेट के भी लोग हैं, आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीज़न, सो वो उनके लिए भी कुछ अच्छा ऐड कर सकते हैं. क्योंकि देखें, ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी एज या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती. आप कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकती हैं. जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है. अगर आपका माइंडसेट ऐसा है
कि आपको है कि भाई मैंने ये काम करना है या मैं ये काम कर सकती हूँ, एंड आप पॉजिटिव हो, तो आप अपनी ज़िंदगी तब भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं तो जो हूँ 40+ की हूँ, तो मैं तो अब जो है ये काम नहीं कर सकती, अब तो मेरा ये टाइम है कि मेरे बच्चे जो है, मैं अपने बच्चों पे फोकस करूँ, उन्हें ग्रूम करूँ, उन्हें बड़ा करूँ, उनको जो है किसी काबिल बनाऊँ, तो बस जी मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। इस तरीके से नहीं होता। ज़िंदगी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो चलती रहती हैं, एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, और आप उसको किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, आप इस तरीके से अच्छा बना सकते हो कि आप पॉजिटिवली, ओके थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग सो यंग, yes by face I look very innocent, and I do look young, thank you for that, but ज़िंदगियों को आप अच्छा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से बना सकते हो। आप ना सिर्फ अपने आप को उस लिहाज से अच्छा बना सकते हो जब आप पॉजिटिवली सोच रहे होते हो, बल्कि आप जब लोगों को अच्छी बातें बता रहे होते हो या आप लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, आप उस तरीके से भी ज़िंदगियाँ अच्छी बना सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे, या आप सिर्फ ये सोचोगे कि भाई अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, किसने देखा है, किसी को आगे नेक्स्ट टाइम का पता नहीं है, अगले मोमेंट का पता नहीं है, वो बिल्कुल आपकी बात बजा है। हमें अगले लम्हे का पता नहीं है, पर हमें ये तो पता है ना कि हम जिस लम्हे में हैं उस लम्हे में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं या जो हमारे कंटेंट को पढ़ते हैं, या जिनको होता है कि भाई हमें यहाँ से कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी, हम उनकी ज़िंदगियाँ किस तरीके से अच्छा बना रहे हैं। अगर आप अपने, वो कहते हैं ना कि आप अपने एक्शन से, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आप जो करते हैं उससे लोग ज़्यादा असर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू आप जो बातें कर रहे होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से कैटेगराइज करूँगी, आप जो अपने लिए करना पसंद करते हैं वही आप दूसरों के लिए करना पसंद करें। अगर मैं अपने लिए जो है चाहूँगी कि भाई मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जो है पढूं, उनके बारे में सोचूं या डिलीवर करूं, तो मैं आप लोगों के लिए भी यही चाहूँगी कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड पे रख दें, उसके बारे में ना सोचें। आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ राग़िब रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों से गुफ्तगू करें, तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी और नज़रियात किस तरीके से चेंज होंगे जब आप अपने साथ जो है पॉजिटिव लोगों को लेकर चलते हैं। अगर आप जो है नेगेटिव लोगों को लेकर चलेंगे या नेगेटिव लोगों की बातें सुनेंगे, मैं यही नहीं कहती कि भाई आपको हर वक्त पॉजिटिव लोग मिलेंगे, आपको एक मिक्स मिलेगा लोगों का, जिसमें पॉजिटिव लोग भी होंगे, जिसमें नेगेटिव लोग भी होंगे। ये अब आपकी अक्ल और शऊर पे है कि आप किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। अब जब मैं जो हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे होती हूँ, फेसबुक पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं और मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, और मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को खुद हैंडल करती हूँ। उसके लिए मैं किसी को नहीं कहती कि भाई ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप इसको ले लें, आप इसको हैंडल करें, क्योंकि आप लोग जो है जो कुछ, आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, या मैं जो आपको ऑफ़र करना चाह रही हूँ आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि आपके जो कमेंट्स हैं मैं उनको पर्सनली एड्रेस करूं, और हर एक का कमेंट हर एक से डिफरेंट होता है। कोई आपके जो है फिज़िकल पेरेंट्स पे कमेंट कर रहे होते हैं, कोई आपके कंटेंट पे कमेंट कर रहे होते हैं, कोई आपसे कुछ सीखने के लिए कमेंट कर रहे होते हैं, कोई इसलिए आपके साथ जो है कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाह रहे होते हैं, और सो फॉर्थ एंड सो एंड मोर डिफरेंट, ये जो है तरीक़ेकार डिफरेंट कमेंट्स होते हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे होते हैं। सो आई जस्ट हर रोज़ मैं जो हूँ सबके कमेंट्स जो है मैं पढ़ के उनको जो है उनका जवाब नहीं दे सकती, बट थोड़ा थोड़ा जो है जो फ्रैगमेंट्स होते हैं टाइम के, उसमें मैं जो हूँ मोस्टली वीकेंड्स पे जो है उनको पढ़ती हूँ, उनके आंसर कर देती हूँ।
जिसकी जितनी जो है ज़रूरत होती है वो आंसर बैक कर देती हूँ. बट एट द सेम टाइम दे बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कमेंट्स के मैं आंसर नहीं भी करती, और उसकी वजह ये होती है कि वो कमेंट्स ऐसे नहीं होते जिनके ऊपर जो है मैं चाहूँ कि भाई टाइम यू नो दैट इज़ मोर, वो कमेंट्स दोज आर मोर ऑफ आई थिंक टाइम वेस्टर्स. सो आई जस्ट ट्राई कि भाई उन कमेंट्स को एड्रेस किया जाए जिसमें कोई वैल्यू हो, जिसमें लोगों की ज़िंदगी के लिए कोई भलाई का कुछ मौका मुझे नज़र आए, या यह है कि किसी को कोई ज़रूरत है गाइडेंस की तो उसको उस डायरेक्शन में गाइड कर दूँ. बाकी जहाँ तक मेरे से गाइडेंस होती है मैं उसके लिए जो कुछ मैंने ओवर द ईयर सीखा है या जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स या डाल देती हूँ मैं, या फिर उनकी जो है यूट्यूब पे जो है डिफरेंट वीडियोस जो है अपलोड कर देती हूँ कंटेंट रिलेटेड, जिस तरह हो गया या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया कि आपने अगर उस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है तो आप किस तरीके से करेंगे. सो ये चीज़ें मैं करती हूँ. तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इस्टेब्लिश करते हो. दिस इज़ कनेक्टिंग डॉट्स. लाइक इफ़ आई से कि अगर इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट जब आमतौर पे लोग मेरे से पूछते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एंड मैं उनको बता रही होती हूँ. अब मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैं इनको क्या क्या बताऊँ. सो फॉर दोज हु डू नॉट नो, I have a master's degree in English literature and linguistics. और then after my master's फिर मैंने not rightly after that but यह है कि still I did I pursue another degree which was after my marriage, and that was MSc in Women's Studies. That was a long distance learning program जो कि मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, and I did my degree over there. But in between इसमें जो है बहुत सी जो है आई वुड से एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत सी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हैं जो कि मैंने की हैं, एंड इट्स अ लॉट. देन अगेन उन लोगों के लिए हु थिंक, जो बाज़ दफ़ा मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कहते हैं कि भी शी इज़ अ फेक पर्सन एंड शी इज़ अ टाइम वेस्टर एंड शी वांट्स व्यूज़, इसलिए ये जो है इस तरह की बातें करती हैं. तो देखें, आई वुड से कि जिन लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टाइम वेस्टर्स नहीं होते, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उस पोजीशन में होते हैं कि वो आपको कोई अकल की बात बता सकें या आपको कोई टिप्स दे सकें. जो एरियाज़ मेरे नहीं हैं मैं उन पे बात नहीं करती. जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई फोर्टे, मैं उस पर बात नहीं करती. फाइनेंसेस इज़ नॉट माई फोर्टे, मैं उस पर बात नहीं करती. आप अगर मेरे से कहीं मैथ्स पे बात करो, मैं मैथ्स पे नहीं बात कर सकती. जो हमारा इस वक्त करिकुलम है, जिस तरह ओ ए लेवल्स हो गया, आई डू नॉट नो अबाउट दैट सिस्टम. आई नो टू द एक्सटेंट, क्योंकि मेरे बच्चे जो है दे आर इन दैट एज ब्रैकेट ओ ए लेवल्स करने वाले, सो वो मुझे पता है. बट अगर कोई मुझे कहे कि जी मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा दूँ फ्रॉम ओ ए लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है दैट हैज़ बीन मोर इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर या एनजीओज में, या फिर एज कंसल्टेंट, या फिर इवन एज लेक्चरर व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. चूँकि जो है I got a really good score. I was a position holder and I got good grades. तो मेरे जो superiors थे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया लेक्चरशिप, एंड आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको आफ्टर मास्टर्स लेक्चरशिप ऑफ़र की जाती है. एंड आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, आई गेस 21-22 को मैं होंगी, बट दैट वॉज लॉन्ग बिफोर जब मैंने CSS किया. और एंड इवन माई मेंटोर्स दे न्यू कि शी हैज़ द पैशन टू डू CSS. सो उन्होंने जब मुझे लेक्चरशिप ऑफ़र की, दे आस्क्ड मी कि इफ़ यू हैव टू टेक द एग्जामिनेशन तो would you still consider taking this job, or you want to do CSS? And it was an opportunity and it was a great moment in my life, and I really felt very good about it and I accepted it, and I don't have any regrets, क्योंकि doing lecturership in a university
at that age, at the age of 2021, that's really it's a blessing, and it's really an opportunity. So I availed that opportunity, and I taught in the university for 2 years, and then I took the CSS examinations. But the thing is that कि आप ये कहें कि भाई आप यानी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो कुछ ऐड करी और दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं ऐड करी, तो यू शुड टोटली फॉरगेट दिस, क्योंकि हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐड करी है। चाहे आप टीचिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है CSS कर रहे हैं, चाहे आप जो है फेल हो रहे हैं, चाहे आप जो है आगे कोई और चीज़ परसू कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग विद ईच अनदर। आपका क्या काम है, आप उन सब कनेक्शंस को ज्वाइन करें और उनसे लर्न करें। अगर आप जो है लर्न नहीं करेंगे तो देन येस आई वुड से कि आपकी ज़िंदगी इज़ अ फेलियर। बट अगर आप हर स्टेप पे, एवरी स्टेप ऑफ द वे लर्न करते हैं, तो आपकी लाइफ फेलियर नहीं है। यू आर गोइंग टू enjoy your life every bit, every moment. So this is what I wanted to share, and this is how I spent my life and my time. Or those of you who always say कि जी you're always busy, आप comment नहीं करती, आप respond नहीं करती, so this is for those कि yes, I try to keep myself busy, क्योंकि आप जब busy होते हैं, busy का ये मतलब नहीं होता कि you just show you're busy and you're doing nothing. बिज़ी का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी लाइफ की जितने टाइम है उसको प्रोडक्टिवली अवेल कर रहे हो, चाहे उस टाइम में आप जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हो, या अपने गोल्स को परसू कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो। अगर आप अपना टाइम को जो है एक कैप्सूल में डिवाइड कर देते हैं, लाइक आप उसे चंक्स बना लें, 3 आवर्स आप रख लें, ओके जी 3 आवर्स में मैंने ये काम करना है। लाइक अगर मैं 3 आवर्स रख लूँ तो मेरा होगा कि ओके 3 आवर्स में मैंने जो है सोशल मीडिया पे जितनी पोस्टिंग है वो सारी करनी है, उससे रिलेटेड सारे काम करनी है। देन अनदर 3 आवर्स को जो है अगर मैं रख लेती हूँ कि ओके ये जो 3 आवर्स है इसमें अब मैंने घर का कोई काम करना है, चाहे उसमें कुकिंग हो, चाहे उसमें पिक एंड ड्रॉप हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो 3 आवर्स आपने रख लिए, तो उस 3 आवर्स में आपका सिर्फ जो अटेंशन होगी वो उन कामों की तरफ होगी। देन अनदर 3 आवर्स आप फ़र्ज़ करने रखते हैं कि मसलन जितना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये 3 आवर्स मेरे पास हैं, इसमें मैंने जो है ना लर्निंग करनी है। अब वो लर्निंग कोई भी हो सकती है, वो लर्निंग ये भी हो सकती है कि आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल है, आप उसको मज़ीद जो है इम्प्रूव कर रहे हैं और आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं। एक वो हो सकता है, उस लर्निंग में आप वो कर सकती हैं। उस लर्निंग में आप जो है कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं कि भाई ओके ये बुक मैंने काफ़ी अरसे से लेकर रखी हुई है और मुझे पता भी है इस बुक में क्या है, बट आई नीड टू रीड इट। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो बेस्ट कंपनी है ना वो बुक्स है, या आप कुछ रीड कर रहे हैं। बुक्स में आपको जो है, क्योंकि इट्स इन प्रिंटेड फॉर्म, तो उसमें आपको अपने आप को जो है ना सर्व करना पड़ता है। यू हैव टू कंसंट्रेट। विदाउट बुक्स जो है you cannot gain the confidence, or you cannot have learn certain things without going through books. हवा में आप बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हवा में बातें करेंगे तो people would think कि you are a quack, and you don't want people think that you are a quack. So you can always go through the books. आप अगर जो है लोगों को कोई नॉलेज दे रहे हैं, मतलब अभी मैं जो आपको दे रही हूँ, दीज आर ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको किसी बुक से कोट करी हूँ। अगर लाइक आई गो थ्रू अ बुक, आई वुड डेफिनेटली कोट समथिंग फ्रॉम द बुक, एंड देन आई वुड मेंशन कि भाई ये मैंने फ़लानी बुक पढ़ी थी, उससे जो है उस बंदे ने जो है अपनी बुक में ये बात की हुई थी, तो आई वुड बी कोटिंग। बट अभी जो है आई डोंट वांट टू गो इनटू द बुक्स और डिस्कस थिंग्स फ्रॉम देयर। दिस सेशन, दिस लाइव सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द रीज़न कि भाई जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, या मैंने लाइफ में कहाँ कहाँ फेलियर फेस किया, और CSS में फेलियर फेस करने के बाद व्हाट डिड इट डू ऑफ मी, डिड आई turn out to okay, I think it's back. I think there was some connection disruption somewhere, so I'll just try to wind it up right now.
क्योंकि आई डोंट वांट के यू पीपल आर वेटिंग एंड वाचिंग एंड माय कनेक्शन इज़ गॉन. सो बेसिक मकसद जो है लाइफ आने का यही था कि भाई ज़िंदगी एक फेलियर या दो फेलियर या तीन फेलियर के बाद ख़त्म नहीं हो जाती. यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ, कीप ऑन परसुइंग. क्योंकि जब तक ज़िंदगी बाकी है उसमें हम सब किसी ना किसी फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं और चल रहे हैं. अब वो लोग जो कि लाइक अगर जो है इफ़ यू पीपल विजिट माई प्रोफाइल तो आप जो है मोस्ट ऑफ यू आर यू नो लुकिंग एट द स्टैट्स और द व्यूज़ और द फॉलोअर्स. ये सारी चीज़ें जो है यू डोंट हैव फॉलोअर्स ओवरनाइट. यू इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस. जिस तरह लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, उसमें जो है और जितनी चीज़ें हैं वो आपके साथ चल रही हैं एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड और हर एक चीज़ एक जो है ना इट्स अ लाइफ प्रोसेस. सो जो आपको फॉलो करते हैं वो जो है किसी भी चीज़ से जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. either they are influenced from the work you are doing, either they are influenced from your personality, either they are influenced from some part of your personality. So उसकी वजह से आपको जो है लोग व्यू करते हैं, आपको देखते हैं. I believe and I practiced that too कि जब आप लोगों को वैल्यू दे रहे होते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ऐड हो रहा होता है, that is when you are doing justice to being on the social platform or being anywhere or people. Okay, it's back. Okay, before every one of you just go away, I'll just wind it up and I'll just say कि भाई inshallah I'll come live again next time. Or next time I would be talking about कि how in reality you should use, yeah, even if you are on Facebook. Okay, so इससे पहले ये कनेक्शन एक और दफ़ा जो है डिस्टर्ब हो, I'll just wind it up. But before that, I would want to answer certain questions जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं. Let me just check out. Okay. Okay. Thank you, everyone. Okay. I guess most of you have gone by this time. Okay. There's one question from Abid Ali Shah. He's saying वो मेरे से पूछना चाहते हैं कि भी CSS के जो दोनों अटैम्प्ट आपने की थी उसमें दोनों टाइम ऐसे में आप क्लियर थी. यस आबिद अली शाह, CSS का मैंने जो है एक ही गो में रिटन पोर्शन हर दफ़ा क्लियर किया है. सो मैंने सेकंड टाइम जो है इसलिए नहीं रिपीट किया था कि मैं जो हूँ रिटन में जो पास नहीं थी. मेरा हर दफ़ा मसला इंटरव्यू में पड़ा है. सो आई कुडंट क्लियर द इंटरव्यू पोर्शन एंड आई हैव नो रिग्रेट क्योंकि आई थिंक कि इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी. और CSS का एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगी आप लोग हमेशा याद रखिएगा. ओके, सो CSS का इन द एंड आई वुड से कि हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जो लोग CSS के लिए अपीयर करते हैं उनका जिस भी किस्म का खौफ होता है CSS उनका खौफ निकाल देता है. और वो खौफ ऐसा निकलता है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको जो है आपके अंदर डर नहीं होता कुछ ना करने का. वो डर जो है ना CSS ऐसा आपका निकालता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स जो कि CSS के एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना है एंड देन गोइंग देयर एंड देन टेकिंग दोज एग्ज़ाम्स. सो जो फियर होता है वो आपका निकल जाता है. सो इसके साथ ही जो है मैं इजाज़त चाहूँगी. नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी और यह है कि लाइव डिस्कस करेंगे क्योंकि लाइव आई थिंक इट्स द बेस्ट वे. अगर मैं सेशंस रिकॉर्ड करती हूँ या अपलोड करती हूँ तो मुझे उस तरीके का फीडबैक आप लोग नहीं देते जो कि आप मुझे लाइव दे सकते हैं. सो मैं लाइव आकर आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी. और नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट टू डिस्कस कि भाई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इसके साथ ही thank you so much and every one of you those who have tuned in and left your messages. I will be going through your messages and I'll be definitely answering you back
And thank you everyone for your emojis and your emoticons. यही आप लोगों की मोहब्बतें हैं और comments हैं which keep me motivated, and I keep going and I try to keep on doing good things which can add value to you people's lives. With that, Juma Mubarak, Allah Hafiz, and take care.